ये कैश मैनेजमेंट की डिस्कशन का दूसरा हिस्सा है एंड दिस इज़ 161st मॉड्यूल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस मॉड्यूल के अंदर हम अपनी कैश मैनेजमेंट की डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि कैश मैनेजमेंट के अंदर अंडर डिस्कशन आते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वील बी टॉकिंग अबाउट इज़ व्हाई वी नीड कैश। हमने इस पे कुछ डिस्कशन अपने पिछले मॉड्यूल में भी की थी जिसमें हमने ये बात कही थी कि हमें कैश की ज़रूरत कहाँ कहाँ पर और क्यों पड़ती है। एंड हेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट the three basic motives of holding cash. The first one is the transactional motive. The transactional motive is transaction is, by the way, an activity of a business which can be shown in a monetary value. When we purchase something, it is a transaction. When we borrow cash, it is a transaction. When we deposit cash, it is a transaction. When we sell goods, it is a transaction. So, all these are transactions. Some of these transactions involve cash and the others do not. For example, if we buy something on credit, it is purchases and accounts payable. So, cash is not involved. But later, the cash will be involved when we'll have to make the payment to the creditor. So, in that case, the accounts payable and cash will be there. So, for various transactions, we need to have cash. So, we say that the first motive of holding cash or keeping cash is the transactional motive. The second one is a speculative motive. At times, we get opportunities, and to avail those opportunities in terms of business, in terms of making more profit, in terms of getting more return. So, in that case, we need to have sufficient amount of cash or at least have the availability of arranging cash so that we can make those effective use of those opportunities. तो हम अपने पास कई दफ़ा इन स्पेक्यूलेटिव पर्पसेस के लिए भी कैश को मेंटेन करते हैं कि अगर कुछ चीज़ें हमारे सामने आए या कुछ कॉन्टिजेंसीज हमारे सामने आए तो हम उनको यूटिलाइज कर सकें इफेक्टिवली अपने बिजनेस के ऑपरेशंस में. एंड द थर्ड वन इज़ प्रिकॉशनरी मेजर. प्रिकॉशनरी मेजर का मतलब ये है कि इट हैपन्स, वी ऑल नो that whatever we plan, whatever is our budget, whatever was the anticipated requirement of our cash may not be our actual requirement. We might have thought about having, let's suppose, $100,000 cash enough for a month, but actually we require more than that because of some emergencies, because of some unforeseen things, because of lack of planning. So it happens that at times we are short of cash because of all these possibilities. So हम कुछ ऐसा कैश अपने पास ज़रूर रखते हैं कि अगर कोई हमारी प्लानिंग में चीज़ आगे पीछे हो और हमारी कैलकुलेशंस की कोई गलती हो या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए which was not there when we started the planning of our cash amount. So we should keep an amount for safety, for precautionary measures. So these are the three common reasons of or motives of having or holding cash. That is for transactions, that is for utilizing any opportunity, and that is for keeping ourselves safe if there are some emergencies. Now, when we talk about the management of cash, generally in the normal course of business, cash is paid and received. यानी हमें ये बात मालूम है कि जब हम गुड्स खरीदते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, एक्सपेंस करते हैं, तो उससे हमारे पास कैश की आउटफ्लो होती है. एंड व्हेन वी सेल गुड्स तो हमारे पास कैश की इनफ्लो होती है. सो दिस इज़ अ साइकिल दैट वी आर पेइंग कैश एंड वी आर रिसीविंग कैश. So more we are paying for purchases of our goods and expenses, more will be the outflow of cash. And if we are receiving more from our receivables, accounts receivables, or from sales,
So more will be our inflows. So there is a cash cycle, that cash is coming in through revenue and sales and it is going out for expenses and for the purchase of goods in the normal course of business operations. So we calculate what is called a cash conversion cycle. This cash conversion cycle is basically related to our production or our sales cycle, जिसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं. यानी जब हम सेल्स करते हैं तो हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल अराइज होते हैं जिसमें हमारा कैश ब्लॉक होता है. ये डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं जहाँ पर हमने रेशोज़ की और एक्टिविटीज़ की बात की थी. जितना रिसीवेबल्स का क्रेडिट पीरियड ज़्यादा होगा उतना हमारा कैश ज़्यादा अरसे के लिए ब्लॉक हो जाएगा, एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. द सेकेंड थिंग इज़ दैट व्हेन वी कीप इन्वेंट्री, our cash is also blocked in inventory, and longer is the period and more is the quantity of inventory that we are holding, more cash will be involved and for longer period of time it will be involved. So ये दो चीज़ें हैं जिनको हम ऐड कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, और इससे हमारे पास वो फिगर आ जाती है कि कितनी अमाउंट ऑफ कैश हमारी ब्लॉक रहेगी. Now on the other hand, we have to make the payments to our suppliers, our creditors, जिनसे हमने क्रेडिट पर उधार चीज़ें खरीदी हैं. तो उनकी जो हमने पेमेंट करनी है, अगर वो अमाउंट भी लार्ज है और वो भी पीरियड अगर बढ़ता चला जाता है तो हमारे पास कैश कुछ बच जाता है, बिकॉज वी हैव नॉट मेड द पेमेंट टू देम. सो वी कैलकुलेट दिस कैश कन्वर्जन साइकिल. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इट, दैट वी ऐड द रिसीवेबल्स टाइम पीरियड, which is the days of sale, and the inventory holding period, this is the days of inventory, and we subtract out of that the payables outstanding, or you can say the number of days after which the payment is made to the creditors. How can we improve this cash cycle? हम कैसे इसको बेहतर बनाएं कि हमारे पास ज़्यादा कैश ऑपरेशन से हासिल होना शुरू हो जाए. So as I've just talked about, that accounts receivables and inventories are the two accounts where our cash is blocked. यहाँ पर हमारा कैश हमारे पास नहीं आ रहा और पेबल्स को ब्लॉक करने से हमारे पास कैश रुक रहा है. So common sense is that if we can reduce the credit period, if we can reduce the days for which accounts receivables are there in our business, and if we can reduce the holding period of inventory and we can reduce the quantity of inventory, तो इससे हमारे पास कैश साइकिल इम्प्रूव हो जाएगी. और इसी तरीके से अगर हम पेमेंट के पीरियड को बढ़ा देते हैं तो उससे भी हमारे पास कैश साइकिल इम्प्रूव हो जाएगी. सो what I say is that to improve the cash cycle, we have to reduce the receivables and inventory amounts, and we have to इंक्रीज द पेबल्स अमाउंट. तो ये जो हमारा मॉड्यूल है जो कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसको हम यहाँ पर यूँ कंक्लूड करते हैं कि कैश का होना, उसके यूजेस 3 तरह के हैं. स्पेक्युलेटिव है, प्रिकॉशनरी है और ट्रांजैक्शंस हैं. और फिर हमारे पास ये जो एक नॉर्मल बिजनेस में कैश साइकिल क्रिएट होता है, ये हमारी परचेजेस से रिलेटेड है, हमारी सेल से रिलेटेड है और हमारी इन्वेंट्री होल्डिंग से रिलेटेड है. और हमें इसको कैश साइकिल को इम्प्रूव करना है इस तरीके से कि हमारे पास कैश की इनफ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारे पास कैश की आउटफ्लो कम से कम हो, ताकि हमारे पास ज़्यादा अरसे तक ज़्यादा कैश अवेलेबल हो फॉर ऑल द मेजर्स दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन दिस मॉड्यूल.